formula. I've got very few formulas to use, एंड इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही बहुत अच्छे से स्कोरिंग चैप्टर बना सकते हैं अपने लिए. सो मेरी एडवाइस है सब बच्चों को कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करिए. जिन लोगों को आगे मैथ्स पढ़नी होती है 10th क्लास के बाद, उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे की मैथ्स में, आगे की कॉम्बिनेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा. आपका एक बेस तैयार होगा, आपकी एक फाउंडेशन तैयार होती है इस चैप्टर को करने के बाद. Now, in our syllabus, we have got two parts of this chapter. So the first part I am taking up today in this video, that is section and midpoint formula. Now, this formula is basically about, so if I say what we are going to study in this video, so it is about the section formula and how, what is section formula, उसके applications क्या क्या हैं, कहाँ उसको हम use करते हैं, कैसे उसके किस किन चीज़ों में हम सेक्शन फार्मूला को लगा सकते हैं. बिकॉज सेक्शन फार्मूला केवल एक ही होता है, बट उसके एप्लीकेशन बहुत वर्सेटाइल हैं. अगर आपको उसके एप्लीकेशंस पता होंगे डिफरेंट, यू कैन ऑलवेज यूज दिस फार्मूला इन द क्वेश्चंस एज एंड व्हेन यू वांट. Then the second application, the second part you can say, rather the derivative of the section formula is midpoint formula. We use this section formula to prove points of trisection. I will take up this later in the video. सो अभी मैं आपको शुरुआत करता हूँ बताने से कि क्या होता है सेक्शन फार्मूला और हम कैसे और किस जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जो लोग ये भूल गए हैं, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया नहीं है, उनके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक स्लाइट इनिशियल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, एज यू कैन सी. X is y and x is x. This is known as origin. I hope you all know this. Then any point in this plane is having a coordinate of x and y, where x is called the abscissa and y is called the ordinate. So when we plot the point, we locate the point in any Cartesian plane having four quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो जो पॉइंट होता है वो इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा और हम उसको लोकेट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं. सो हियर आल्सो आई एम यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट x, y, where we plot x along x axis and y along y axis. So the point is x, y. So the point is 3, 4. This point lie in the first quadrant and both are positive. So in the first quadrant I plot 3 here and I plot 4 here. I've got the point 3, 4. That is how I receive a point in any quadrant. Now coordinate geometry का बेसिक हम 9th क्लास में पढ़ कर आते हैं, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग यू मच अबाउट द coordinate geometry, the plotting of points and the location of points, first quadrant, second quadrant. I am expecting कि आपने ये सब पहले से ही 9th क्लास में पढ़ लिया है. So we focus more on the next topic which are important for you in this year. So here you can see that I have this Cartesian plane with me and I have plotted a point 3, 4. So जो उसका बेसिक एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. Now what is distance formula? And I hope you all have used this in your 9th class. जहाँ हमारे पास दो पॉइंट गिवन है x1, y1 and x1, x2, y2. अब मुझको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए we use distance formula. The difference of the abscissa, square, and difference of the ordinates and the square of it. I got x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square with the square root. I can also say x1 minus x2 whole square and y1 minus y2 whole square with the root. It does not make any difference to us. It is same because square makes everything even. The square makes everything positive. So it does not matter. You don't worry about which point to be taken first, A point or B point. It does not have any difference. You can take B as x by 1 and A as also x to y2.
it doesn't make any difference, right? So I move on to the next, and that is the distance formula, section formula, and midpoint formula. You see very carefully here. So there is a Cartesian plane, x is x and x is y. I've got 2 points here, point A and point B, such that their coordinates are known to us, x1, y1 and x2, y2. I have a point here in between point P whose coordinates are unknown and points are between coordinates x, y. So ये एक ऐसा point है जो कि लाइन A और B को m and n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कुछ लोग उसको m1:m2 ले लेते हैं, कुछ लोग उसको m और n ले लेते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे कंफर्टेबल हैं। I sometimes advise to students that take m1 and m2 as the ratio. So I got x1, y1 and x2 are the coordinates of the point of the line joining 2 points and point P is line. मुझको इस point P के coordinates find out करने हैं। कैसे find करेंगे? By using the section formula. So what is section formula? I'm going right away on this, proving we don't need to do in our exam. So I will use the formula exactly. So the first quadrant, that is x, is given by mx2 plus nx1 upon m plus n, and y is given by my2 plus ny1 upon m plus n. Now sometime if I add it with more into it, so this is a line segment, this is A and this is B, this point is P. आप यहाँ पर x, y मार्क करिए, x1 y1, x2 y2, m1 and m2. इससे क्या फायदा होता है, आप जिस तरफ x1 y1 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं उस तरफ आप m1 मार्क करते हैं, आप जिस तरफ x2 y2 मार्क करते हैं वहां पर आप m2 मार्क करते हैं, and so it makes it easier to decide that we going from m1 into x2 and m2 into x1. So m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Then we got y equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. It makes it easy a little bit instead of using m is to n. So ये आपकी चॉइस है कि इसको आप कैसे यूज करते हैं, and we can find the coordinates of x and y. The coordinates of point P and point x can be find out by using this section formula. So section formula का इस्तेमाल मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, किस लिए है, किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो कि उस लाइन के बीच में लाई करता है जहां पर A और B पॉइंट्स इसके एंड पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, और रेशियो जिसमें पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को, वो रेशियो m:n है या m1:m2 है, एंड आई गॉट x इक्वल्स टू m×x2 plus m×x1 upon m plus n. आई होप आई एम गेटिंग क्लियर टू यू. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चंस को और एक बार अपने टॉपिक पे खोल के बैठिए और उनमें नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में एक लाइन ड्रॉ करिए, उस पर एंड पॉइंट्स मार्क करिए, उन पर एक पॉइंट P मार्क करिए, रेशियो मार्क करिए, एंड देन राइट द सेक्शन फॉर्मूला. अंडरस्टैंड, you must make a list of formulas before any chapter you do. So the first page of your chapter must have all the formulas in your copy. Don't say that they're in the book, so you don't write in the copy. Write all the formulas in the copy as well. Right. The second use of this section formula. I'm coming on to the applications of section formula rather. So the second point, we can say we use this section formula to find out the coordinates of all the coordinates of the ratio in which the point is dividing the line. Just give me a minute. So yeah, so suppose I've got a line with me and I've got the coordinates as x1 y1 and x2 y2. This point is A, this point is B, this point is P,
say ratio हमको find out करना है. Now there are 2-3 things we can do with this. I can take point as ratio as m1 m2, or I can take as m or n, and one more thing, I can take it as k is to 1. So you can use any one method of them. आप इसको k is to 1 मान सकते हैं, आप इसको m is to n मान सकते हैं, आप इसको m1 m2 मान सकते हैं, आप किसी भी रेशियो से इसको सॉल्व कर सकते हैं. I prefer k is to 1. Now why k is to 1? K is to 1 makes it very easy to calculate the ratio in which the point is dividing line segment AB whose endpoints are known to us. So the point P is x comma y, and I need to find the value of k upon 1. So for the coordinates of x as for the coordinates of x in terms of k, so x equals to x2 into k plus 1 into x1 upon k plus 1, and y equals to k into y2 plus 1 into y1 upon k plus 1. This gives us the coordinates of the midpoint or the dividing point in terms of k. Now suppose the value of x is known to me. So अगर x की वैल्यू नोन है, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और कैलकुलेट करिए, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. जो भी k की वैल्यू आएगी यहाँ से, वही वो रेशियो है जिस रेशियो में पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है. आपको अगर y की वैल्यू मालूम है तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए. That gives you again the value of k in which a point is dividing the line segment. So we should first of all see कि जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके के हैं. क्या हमको उसका ऑर्डिनेट पता है या हमको उसका एब्सिसा मालूम है. अगर हमको उसका एब्सिसा मालूम है, आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करिए. आपको उसका अगर ऑर्डिनेट मालूम है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करिए. अंडरस्टैंड, दोनों से सेम रेशियो आएगा और ये हमको डिवाइडिंग रेशियो प्रोवाइड करवा देता है. That is the application of section formula. First application. Now we move ahead. Suppose in this section formula, what I do is that I put the ratio as 1:1. मैंने यहाँ पर 1:1 का रेशियो अप्लाई कर दिया. So m equals to 1 and n equals to 1. So what I got? I got 1 into x2 plus 1 into x1 upon 1 plus 1. I can understand, you can tell me very quickly that it is x1 plus x2 upon 2. And then I put m and n1 here. That gives me 1 into y2 plus 1 into y1 upon 1 plus 1. I've got y1 plus y2 upon 2, and that is the value of y. So if I sum it up, the midpoint formula is x1 plus y1 upon 2, comma x2 plus y2 upon 2. That is the the midpoint formula of this line. I hope I'm clear about this, everyone. So I have told you two things here. The first thing was that how to find the section formula. The other one is how to find the ratio, and the third was midpoint formula. Midpoint formula, I repeat once again, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is the midpoint formula. हमने अभी तक 3 यूज पढ़े हैं सेक्शन फॉर्मूला के. सेक्शन फॉर्मूला का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, that is to find the point of trisection. So how to find the point of trisection? What is the point of trisection? So point of trisection, what is basically point of trisection? पहले ये समझते हैं हम कि point of trisections क्या होता है. Got a line A
and B. There are 2 points lying on this line such that these 2 points are making 3 equal parts of this line. 1, 2, and 3. I've got 3 equal parts of this line. I've got 2 points, which makes 1 point, 1 part, second part, and third part. All the parts are equal to each other. Then again see, you can see this diagram also. C and D are 2 points between A and B. Now AC, CD, and DB are all equal. C and D are the point of trisection of this line. So in simple language, ऐसे 2 पॉइंट्स जो किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट है वो लाइन को बाइसेक्ट करता है, 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी 2 पॉइंट्स हैं तो वो लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। अगर 3 पार्ट्स पॉइंट्स होंगे तो लाइन के 4 पार्ट्स हो जाएंगे। सो अभी हम बात कर रहे हैं केवल 2 पॉइंट की जो कि लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। 2 पॉइंट C and D ट्राइसेक्टिंग लाइन AB into 2 parts. So 2 points are C and D, which trisects line segment AB into 3 parts, 1, 2, and 3. Now that also give us an idea that suppose take this point A and point B. This is the first point of trisection, the second point of trisection. I've got 3 equal parts. So you can see that 3 equal parts, 1, 1, and 1. So for the point P, the ratio is 1:2, and for point Q, the ratio is 2:1. That is also the identification of the point of trisection. अगर हम ये ratios calculate करें, जिस ratio में P point AB को divide कर रहा है या Q point AB को divide कर रहा है, तो एक का ratio 1:2 आएगा और दूसरे का रेशियो 2:1 आना चाहिए। अगर रेशियो 1:2 and 2:1 आते हैं, then we say that points are points of trisection. I hope बच्चों आपके पास समझ में आ रही है मेरी। जब तक आप इनके नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कॉपी में नोट जरूर करिए। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, जस्ट हैव अ पेन एंड कॉपी विद यू। आपको हर चीज को नोट जरूर करना चाहिए। नोट करने से ही आपको चीजें याद होती हैं। आप लिखिए, जितना लिखेंगे आप, जितना फॉर्मूले को लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट्स को प्लेस करेंगे, उतना आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी होती जाएगी। सो आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन टू द नेक्स्ट, that is to find the centroid of a triangle. So what is the centroid of a triangle? So I'm making a triangle for you. Let the coordinates are x1, y1, x2, y2, and x3, y3. Now, as you can see, these coordinates are the coordinates of vertices of the triangle ABC. I take one point here, mark it as I. The coordinates are x and y. Now, this point is like if I join these three, AI, BI, and CI, then distance of AI, BI, and CI all will be equal. And the formula for the coordinates of this point is x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. These are the coordinates of centroid of a triangle ABC, such that
such that the point and what is centroid then? So you must know कि centroid क्या होता है. Centroid एक ऐसा point होता है जो कि किसी भी triangle के अंदर लाई करता है और ये ऐसा point है जिसका distance तीनों coordinate से equal होता है. ये उस सर्किल का center